by Jupiter. मेरा नाम है दीपांशा ढींगरा and today we are going to discuss how to lose all your money in the stock market. How not to lose your money बोलना था. Okay, sorry. How not to lose all your money in the stock market. Is stock marketing like gambling? क्या 25 दिन में पैसे डबल हो सकते हैं? मेरे अंकल ने पूरे खानदान के पैसे डुबा दिए स्टॉक मार्केट में, मुझे नहीं खेलना है। ऐसे बहुत अलग अलग सोच रखते हैं लोग स्टॉक मार्केट के बारे में। Maybe that's why only 2.5% people invest in stocks in India compared to over 50% of Americans who own stocks. But they are all true, sort of. The stock market can be like gambling. You could double your investment in 25 days and you could also lose 15 years of saving in one shot. ये लास्ट वाला हमारे एक एम्प्लॉय के साथ हो चुका है। The reason it feels this way is because स्टॉक मार्केट को समझना थोड़ा मुश्किल है, तो ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे पैसे डाल देते हैं। और वैसे भी इंडिया के स्टॉक मार्केट में कोई कम स्कैम्स नहीं हुए। हर्षद मेहता स्कैम, केतन पारेख स्कैम. So the mistrust and stigma around stock markets is understandable. That is why you need to learn the basics before entering the market, and that is why we are here. Let's begin by first understanding कि ये स्टॉक आखिर होता क्या है. A stock is a piece of share in a company. When you buy a stock, you are part owner in the company. अब जब आप स्टॉक खरीदने जाओगे तो आपको दो तरह के लोग ट्रेडिंग करते हुए दिखेंगे. एक होते हैं ट्रेडर्स जो सुबह में स्टॉक्स खरीदते हैं और शाम में बेच देते हैं. ये लोग इमीडिएट ट्रेड्स करते हैं लार्ज सम्स में. यूजुअली मार्केट 1-2 रुपए ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसका फायदा उठा के ये लोग एक दिन में 10,000 तक कमा भी सकते हैं और लुटा भी. फिर आते हैं इन्वेस्टर्स. ये लोग एक कंपनी के स्टॉक्स खरीद के बस बैठ जाते हैं सालों तक और धीरे धीरे इनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ ग्रो होती रहती है. वॉरेन बफेट ने कहा था, इफ यू आरंट थिंकिंग अबाउट ओनिंग अ स्टॉक फॉर द नेक्स्ट 10 years, then don't even think about owning it for the next 10 minutes. तो मतलब खरीदने से पहले अपने इंटेंशन सेट कर लो, क्योंकि आपके इरादे के हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी भी सेट होगी. किस तरह के स्टॉक्स खरीदने हैं, मार्केट्स अप्स एंड डाउन्स कैसे डील करना है, वगैरह वगैरह. प्लस ये भी इंपॉर्टेंट है कि आर यू ट्राइंग टू मेक अ स्टेडी लिविंग फ्रॉम stocks or are you trying to invest your savings? Now that you know what stocks are and what your intentions are, where do you buy stocks? There are many stock exchanges in India. The big two are the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange. But just like when you buy a house, you will have to go through a broker. You'll also have to open a demat account. इंडिया में बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकरेज कंपनीज हैं. आप कहीं भी अकाउंट खोल दो और बस शुरू हो जाओ. ये मार्केट अप है, नहीं ये तो डाउन है. अप डाउन, या खुदा ये मार्केट तो बीच में है. नहीं, आपको मार्केट का हाल जानने के लिए ऐसा तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है. Just like there are two main stock exchanges, India also has two main stock indices that indicate the market trends. They do this by checking the performance of the top stocks in the country. The NIFTY 50 showcases the top 50 stocks and the SENSEX showcases the top 30. Now you have understood the market, the kind of people in the market, and what a stock is basically. But before you start talking to your boss about stock performance, learn some cool words to make it seem like that तुम्हें सब पता है. जब सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर जा रहे हैं तो कूल लोग कहते हैं दिस इज अ बुल मार्केट, और जब सेंसेक्स और निफ्टी डाउन हो तो कहना होता है दिस इज अ बेयर मार्केट. दीज आर बोथ वेरी पावरफुल एनिमल्स, सो आई डोंट नो व्हाई वन इज बेटर देन द अदर. बट वॉल स्ट्रीट पर बुल का स्टैचू है तो बुल इज बेस्ट. नाउ बिफोर यू रन ऑफ टू बाय सम स्टॉक्स, कीप दीज फ्यू थिंग्स इन माइंड. Evaluate stocks and companies on their sales and profit both, क्योंकि खाली सेल्स का मतलब प्रॉफिट नहीं होता और खाली प्रॉफिट का मतलब सस्टेनेबिलिटी नहीं होता. If a company is in debt, then be careful, क्योंकि विजय माल्या अभी भी फरार है. Try seeing why a company works or is doing well. What is their competitive advantage over the competition? For example, Maruti Suzuki has great loyalty and service in India. इंडिया के हर कोने में इनका सर्विस सेंटर मिल जाएगा. That is why you'll find a Swift in every part of the country. That is their competitive advantage. This also leads to my next point, management. For long-term investment, it is important to understand the people who are running the business, what their long-term goals are. Also make sure कि उन पर कोई केस तो नहीं चल रहा, वरना न्यूज पे जब आएगा 10,000 करोड़ की कंपनी डूब गई, तब उस समंदर में तुम्हारे भी कुछ आंसू बह जाएंगे. Most importantly, invest in companies you understand. If you're in IT, invest in IT companies so that you know what is happening and where things are going. Because what you absolutely don't want to do is buy something purely on recommendation. Like I have said before, do your research. Also, इतना रिसर्च कर लिया है, इतने सालों से साथ में रहे हैं, जैसे हम साथ है करके साथ में डूबने की भी जरूरत नहीं है. Don't be emotional with your investments. Also, please don't think अब मार्केट डाउन है, पैसे इन्वेस्ट कर लेता हूँ, फिर अप हो जाएगा तो मैं BMW खरीद लूंगा. You never know how much the market is going to fall and if the up will ever hit the current number. Do your research. Thanks for watching this video. Like, share and subscribe. Please comment below what you want us to talk about in our next video. Until then, goodbye.